من أشاء وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. Jannat and Jahannam had an argument. Jahannam said, in me are the tyrants and the haughty. Jannat said, in me are the weak and the miskins, poor. So Allah judged between them. You are my Jannat, my mercy. I have mercy with you on whom I will. And you are the fire, my punishment. I punish with you whom I will. And for both of you, it is my duty to fill you. We are reading hadith number 615 of Riyadhussaliheen. Babul Tahrim al-Kibri wal-I'jab. So this hadith talks about the fate of the mutakabbirin and those who think big of themselves. Ihtajja ke maana hujjat bazi karna. Hujjat means dalil, argument. They put their dalils and hujjats, an argument with one another. And Jahannam said, I will get Jabbar and Mutakabbir, all the big ones, जो बड़े बड़े हॉटी होंगे, फिरौन, हामान, कारून, नमरूद, हर दौड़ के मैं उनकी बराबर गट निकालूंगी, मजा आ जाएगा उनको. वो किसी ने ऐसे ही शरीफे के तौर पर कहा कि जन्नत जहन्नम में एक और आर्ग्यूमेंट हुआ. जन्नत ने जहन्नम से कहा कि मैं तुझ पर केस करूंगी अल्लाह के दरबार में. जहन्नम ने जवाब दिया, कर लो केस, तुम जीत नहीं सकती केस. तो जन्नत ने पूछा क्यों? तो जहन्नम ने जवाब दिया, इसलिए कि सारे सॉलिसिटर बैरिस्टर मेरे पास हैं. क्योंकि लॉयर सॉलिसिटर झूठ बहुत बोलते हैं, तो जहन्नम में मेरे पास हैं, इसलिए तू केस नहीं जीत सकती. चलिए, ऐसे ही लतीफे के तौर पर किसी ने बैरिस्टर लॉयर की गट निकालने के लिए कहा. तो यहाँ पर जन्नत जहन्नम में ज़रा हुज्जतबाजी हुई. तो जहन्नम ने कहा कि यार क्या बात है, मेरे अंदर तो सारे जब्बार और मुतकब्बिर होंगे. जब्बार जो दूसरों पर सख्ती करें, जो गुनाह में जुरत करें और दूसरों पर सख्ती करने वाले हों. तो मुझ में वो लोग होंगे जो गुनाहों पे जुरत करे, सख्ती करे. असल में जो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाले उसको जबर कहते हैं. तो अगर गलत तरीके पर ज़बरदस्ती करे, रॉन्ग वे, तो वो बुरा है और उसको जालिम कहते हैं. लेकिन सही तरीके पर करे तो बाज़ चीज़ें सही तरीके पर भी एनफोर्स करना पड़ता है, तो वो तो सही है. जैसे दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ने बाज़ चीज़ें हमारे ऊपर जबरन रखी हैं, मसलन खाना पीना, सोना, पेशाब, इस्तिंजा, ये शादी ब्याह और ज़रूरतें, काम काज, पैसे कमाना, तो ये सब अल्लाह पाक ने हम पर लाजिम किया है. लेकिन ये हमारी ज़रूरत की वजह से है, वरना इसके बगैर वी कांट लिव ऑन दिस अर्थ. तो उस हिसाब से अल्लाह की सिफत जब्बार आती है, क्योंकि वो हक़ तरीके पर करते हैं. लेकिन अगर नाहक़ तरीके पर सख्ती करें तो वो मज़मूम है, वो बुरा है, वो जुल्म है. इसीलिए कुरान में कहा, वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, आप उन पर जब्बार नहीं हैं. तो यहाँ भी कहा कि मेरे अंदर जब्बार यानी जो बिला वजह लोगों पर सख्ती और ज़बरदस्ती करते होंगे वो आएंगे. और मुतकब्बिरून जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, हॉटी और प्राउड और आर्गेंट हैं. और जन्नत ने कहा मेरे अंदर ज़ईफ़ लोग और मिस्कीन लोग होंगे. क्या बात है यार, मेरे पास सिर्फ ज़ईफ़ मिस्कीन ही आते हैं, कोई बड़े बड़े नहीं है मेरे पास. वही लॉयर वाली बात. तो मेरे अंदर सिर्फ ज़ईफ़ मिस्कीन ही है. अल्लाह ने कहा असल में जन्नत जो है रहमत है, तो मैं जन्नत के ज़रिए रहम करूं जिस पर चाहूं. जहन्नम मेरा अजाब है, जिसको चाहूं अजाब दूं. दोनों को मैं भरूंगा, दोनों को भरूंगा. ये हदीस यहाँ थोड़ी अधूरी है,
मुस्लिम शरीफ में फुल हदीस है। तो जहन्नम में खाली जगह होगी, एम्प्टी, अंटिल जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन, लाओ और लाओ, भी और जगह है। तो जहन्नम फुल नहीं होगी यहाँ तक कि रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उस पर अपना कदम रख देंगे, तो वो कहेगी बस बस बस, कत कत कत, अब मैं फुल हो गई। अब वो कदम क्या है, क्या रखेंगे, अल्लाह बेहतर जाने, हदीस में सिर्फ इतना कह दिया। और जन्नत में खाली जगह होगी तो अल्लाह जन्नत के लिए एक नई मखलूक पैदा करेंगे, उनको फ्री में जन्नत देंगे, बगैर अमल अमिलू हो, बगैर किसी अमल के अल्लाह जन्नत को भी फुल करेंगे। अल्लाह ने जानबूझ के थोड़ी स्पेस रखी दोनों के अंदर, ताकि बताएं अपना अदल और इंसाफ। चलिए आगे। अबू हुरैरा कहते हैं ला यंजुरुल्लाहु यौमल क़ियामति इला मन जर्र इज़ारहु बतरत, अल्लाह क़यामत के रोज़ नज़र नहीं फरमाएंगे उस शख्स की तरफ जो अपनी लुंगी घसीटे इतराते हुए। बतरन वही फ़ख्र, इतराना, boasting, in a boasting manner he drags his garment and he is doing फ़ख्र। मालूम हुआ कि कोई भी गारमेंट, ट्राउज़र्स, शलवार, लुंगी, जुब्बा, हत्ता कि स्लीव्स भी उसकी लिमिट से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इमामे का शमला जो है वो एक ज़िरा के बकदर तक काफ़ी है, उससे इतना लंबा कि नीचे पाँव तक जाए, सुरीन तक जाए, तो बड़ा और ज़बरदस्त इतना बड़ा पगड़, ये भी लिमिट से आगे है। कोई भी कपड़ा उसकी लिमिट से आगे निकल जाए तो वो इसबाल में आ जाएगा। इसीलिए एक हदीस में फरमाया अल इसबारु फिल इज़ार वल इमामा वल कमीस, इसबाल और लटकाना ये लुंगी में भी है, इमामे में भी है, कमीस में भी है। तो फरमाया जो अपनी लुंगी घसीटे इतराते हुए अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तकब्बुर है, अल्लाह पाक को तकब्बुर वाला पसंद नहीं। हदीस कुरान में है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु डू तकब्बुर। व अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो। ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وآئل مستكبر. Three people are such that Allah will not speak to them on the day of Qiyamah, nor will He cleanse them, nor will He look at them, and they will have painful punishment. An old man who commits zina and fornicates, a king, a ruler who is habitual liar, oft liar, who lies a lot, and a faqir, poor person who thinks big of himself. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. We've read this phrase before as well. The meaning of this is Allah will be very angry with them. Because when you're angry with someone, you don't want to look at them, you don't want to talk to them, and you don't want to have anything to do with them. So Allah will be really, really angry on the day of Qiyamah, and He will be extra angry upon these three. So, لا يكلمهم الله يعني كلام رحمة ولا يزكيهم, meaning He will not cleanse them from their sins. He won't purify them. Only a clean and pure person will be in Jannah. All the dirty and filthy people will be in Jahannam. So He will be, these people, these three will be filthy and dirty. They will not be cleansed by Allah. Allah yanzuru ilayhim, He will look at them with rahmat and shafqat, and for them is painful azab. One is Shaykhun Zanin, right? Shaykh means he is old, and in old age you lose your appetite for food and drink, and you lose your desire for sex. So in spite of being old and weak, right, he still fornicates and sleeps with prostitutes, right? Maybe by taking Viagra, and he's going out on holidays to Thailand and Bangkok and here and there just to do zina, right? And so he's old man, he should be doing tawbah, he should be thinking about his grave, that I'm very near to going in there,
Rather than that, he's still doing zina. Now, if a young man did zina, then we could say कि चलो भाई, उसकी शहवत बहुत भड़क रही थी, तो उसे हो गई गलती. लेकिन अब 70-80 साल का बूढ़ा हो गया है और इस तरह की शहवत भड़काकर जीना करता है, तो अल्लाह is really angry with such person. Second is Malikun Kazzab. Malikun Kazzab meaning a ruler, a king. Now a king's got everything. He doesn't need to lie. He doesn't need to lie. Nobody's going to hold him to account. If a person is scared of someone, then he lies. डर लग रहा है इसलिए झूठ बोल लिया. यहाँ तो कोई king को there is no खौफ, no fear. He doesn't need to lie. But his nature is bad and he loves lying. And he likes telling lies. So this king, this ruler who is kazzab, Allah hates him. An a'il mustakbir. A'il means faqir. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً يعني فقرا. So a person who is poor, pauper, destitute, he's got nothing. But mustakbir, he's got istikbar in him. He thinks big of himself. I am big. You go to poor countries, they have nothing, they live in a hut. But they wear that फटा पुराना शर्ट और बाल में यूं करके कंघी करके और नाक तो इतना ऊंचा है, ठाटी टांग के चलते हैं. हालांकि गरीब है, फकीर है, मिस्कीन है. He should show some tawazu, humility, right? But no, in spite of his faqr wa faqa, he's still being haughty. तो अगर कोई फकीर नहीं, मालदार है, he's got a lot of money and he shows off, तो चलो भाई, it could be understandable कि भाई he's loaded, he's got money, he's showing off. Even though that's bad as well, but you can say कि चलो इसलिए कर रहा है. लेकिन जो गरीब मिस्कीन है, कुछ भी नहीं है इसके पास, फिर भी शो ऑफ करता है. मसलन किराए पर, रेंट पर फरारी ली और शो ऑफ कर रहा है कि मेरी ये फरारी, राइट? तो ये तो तकब्बुर हुआ. तो गरीब आदमी तकब्बुर करे, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है. रवाह मुस्लिम. अल-आइल अल-फकीर. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما فقد عذبته. Izzat and might is my lower garment, and kibriya and greatness is my upper garment. Whosoever attempts to snatch away one of them from me, then I will punish him. قد عذبته meaning سأعذبه, I will punish him. Again, al-izzu, izzun means might, honor, azamat, greatness. Izari, meri lungi. Lungi means lower garment. And kibriya, greatness, majesty, is my rida. Rida means upper garment. Meaning, a person can cover his whole body with these two garments, izar and rida. So, Allah Pak is saying, they are both mine. They are for me. Izzat is for me, honor and might is for me, and kibriya and greatness is for me. It's mine, right? It's fully mine. Full mine. Whoever tries to munaza'at, naza'a means china japti karna, to try and pull something away from someone. Like you pull someone's chadar and take it off him. So whoever tries to pull that from me and take it for himself, then I will punish him. Is this Allah's statement? يقول الله عز وجل है Oh, ना. it's not mine, okay. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل. No, it's Ali's Iraq. No, وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها कहाँ से? हाँ, وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हाँ, तो इसमें मिस हो गया है. There should be يقول الله عز وجل. In my نسخة there is يقول الله عز وجل. Allah says. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, कातिब साहब की भूल होगी. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه. Whilst a man was walking in a suit, his nafs was amazed about himself and he was surprised at his appearance. He had combed his hair and he was walking arrogantly in his manner of walk. Suddenly, Allah caused the earth to swallow him. Now he is
shaking and going deep, deep down into the earth until the day of Qiyamah. بينما رجل يمشي في حلة means suit. Suit हमारे यहाँ तो 3 piece सूट होता है, उसमें ट्राउजर और शर्ट और ब्लेजर सब एक कलर का हो तो उसको 3 piece सूट कहते हैं. तो अरबी में सूट ये कहते हैं कि ऊपर का और नीचे का दोनों कपड़ा सेम हो. जैसे नसीर भाई ने ये कफनी भी काली और पजामा भी काला, ये सूट है. तो चादर भी सेम कलर की हो और ऊपर की चादर लुंगी दोनों सेम हो तो उसको हुल्ला सूट कहते हैं. तो इसने अपने हिसाब से एक सूट ब्यूटीफुल पहना हुआ था और तुअजिबुहु नफ्सुहु, उसको उसका नफ्स अजीब लग रहा था. ही वाज फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ. आई एम समथिंग, मैं बहुत बिग आदमी हूँ, मैं कुछ हूँ. और मुरज्जिलुन रअसहु, रज्जल युरज्जिलु तरजीलन के माना कंगी करना. ही हैड डन कंगी एंड कोम्ड हिज हेयर. यख्तालु, अपने आप को कुछ ख्याल करना. फी मिशियतिही, मिशियतुन मैनर ऑफ वॉक. He was thinking big of himself in his manner of walk. कि suddenly Allah caused the earth to swallow him. खसफा के माना जमीन का अपने अंदर swallow कर लेना, ढसा देना. अल्लाह ने उसको जमीन में ढसा दिया. फहुव यतजलजलु, तजलजल literally means हरकत करना, to shake. So he is shaking and he is descending, going deep, deep down, down, down until the day of Qiyamah. He will keep down. अल्लाह पाक इतने गुस्से हो, इतने नाराज हो गए उससे. तो तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं. मुरज्जिलुन रअसहु ऐ मुमश्शितहु, मिश्तुन के माना कंगी है तो मश्शता के माना कंगी करना. अन यतजलजलु बिल जीमैनी यानी यगूसु व यंजिलु. ही इज क्या कहते हैं, गोता लगाना और डीप जाना और उतरना. तो ही इज गोइंग डाउन एंड डिसेंडिंग इन द अर्थ. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب بالجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي. A man continues to take his nafs and drag it until he is noted among the jabbarin and tyrants, and then he is afflicted by what afflicts them. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يذهب بنفسه يعني يرتفع ويتكبر. يذهب بنفسه لا يزال, to something happen continuously. So a man continuously drags his nafs. يذهب بنفسه, he goes with his nafs, meaning he fulfills all his desires and his nafs is taking him on guna and guna and guna, and he goes up and he does takabbur. He becomes wealthy, millionaire, billionaire, trillionaire. He thinks big of himself. I am prime minister, I am foreign minister, I am president, I am king. And he thinks big of himself. His nafs keeps dragging him until he is noted among jabbarin, and whatever afflicts the zalimin will afflict him as well. Yartafiu means, yadhabu bi nafsi means going up, and takabbur feeling haughty. Next chapter is chapter number 73, Babu Husn al-Khuluq. This chapter is about beautifying the character. Husn means beauty, and khuluq, akhlaq, etiquettes, manners. ملكة للنفس يقتدر بها على صدور الأفعال الجميلة بسهولة. And khuluq, akhlaq is a malaka in a person with which he can do good things with ease. Khuluq, Ibn Abbas said that akhlaq are with deen and shari'at. The more deen you have, the more good akhlaq you will have. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was said to be having the most beautiful akhlaq. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. You are of sublime characters. And he said, وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I have been sent to complete and perfect beautiful characters. So beautiful characters will include, sabr, shukr, rida, taslim, tawakkul, happiness, being cheerful, having a good sense of humor, tawazu, humility, humbleness. This is all beautiful characters.
Allah subhanahu wa ta'ala gathered these in وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Suppressing the anger, pardoning people, doing ihsan to people is good akhlaq. So, husnul khuluq is defined in this way. وإنك لعلى خلق عظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين are all good akhlaq. Anas radiallahu anhu says كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam had the most beautiful akhlaq among people. Among people, he had the best akhlaq, best manners, best behavior. Even right from before Nabuwwat. You know, not after Nabuwwat, before Nabuwwat as well. This is why they used to call him as-sadiqul ameen, the truthful and the trustworthy. You know, husni khuluq, there is a discussion here. Is it gharizi and tabi'i or is it kasbi, iktisabi? Is it natural, ingrained in the person, or is it iktisabi that a person earns it? So some muhaddithin shurra say it's natural, it's ingrained in a person. Others say it's iktisabi, you have to earn it. But there are others who say some is ingrained, gharizi and tabi'i, and other is iktisabi. So a person does have good manners on him, but then he works on him and he improves those good manners. This is where Sufiya Kiram come in contention. You go to Sufiya Kiram, you stay in the suhbah, and you increase your good behavior and good manners, good akhlaq. So, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was naturally well behaved. You know, when he was small and he was growing up in Abu Talib's house, one riwayat says that the family would give food to the kids and they would jump on the food. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam would not jump on the food. He would stand at the side. And then when they were finished, then he would go to the food and whatever is left over, he would say Bismillah and eat it. So Abu Talib noticed this once he saw it. And he said, oh, Muhammad must be staying hungry. And he said, no, Muhammad should be either given separate food or he should be allowed to sit with them and eat together. And when he would sit together and eat with them, there would be lots of barakat in the food. Now he's a child, but look at his good behavior. So it was in him right from the beginning, from his childhood. His nature was beautiful. So good akhlaq are natural. So Huzur was naturally of beautiful characters. Anas radiallahu anhu says, ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه. Anas radiallahu anhu, who is Khadime Rasul sallallahu alaihi wasallam, reports, I have not touched a resham silk, whether it was thick silk or normal silk, which would be more softer than the palm of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. And I have not smelled any fragrance which is more beautiful than the fragrance of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. And I have served him for 10 years. He never said to me, "Uff, oh, what's this?" And never did he say to me for something I did, "Lima fa'altahu," why did you do this? Nor for something which I did not do, that why did you not do this? Muttafaqun alayhi, Bukhari, Muslim both narrated. Again, ma masistu, masse, massu, massan means to touch. So, masistu, I did not touch. Dibaj and harir. Dibaj means, thick resham, like velvet. Harir means mutlaq resham, right? Harir, mutlaq, reshmi, like scarf, which is made from barik silk. So, nor thick silk, nor barik silk
more softer than the hand of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. Huzur's hand was like resham, reshmi rumal ki tarah soft tha. You know, our Hazrat used to say, Hazrat Sheikh's hands were like this. Hazrat Sheikh's hands, if you shake hands with him, you would feel that there's no bones in there. इतना नरम था, जैसे सिर्फ गोश्त ही गोश्त है, हड्डी है ही नहीं हाथ में, इतना नरम हाथ था हज़रत शेख का. तो ये जो तकवा है, सलाह है, जिक्र फिक्र है, तो उसकी नरमी जो है वो बॉडी पर भी आती है, तो जिस्म भी नरम हो जाता है. तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक बहुत सॉफ्ट था, हाथ मुबारक बहुत नरम नरम था. और वला शमीम तू शम यशुम शम्मन मीन्स सूंघना, to smell. Raiha, fragrance. Atyaba, more pleasant, more beautiful than the fragrance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I've never smelled any fragrance more beautiful. And I did khidmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 10 years. 10 years is a long time. 10 years. And during these 10 years, he never said oof to me. Oof is when you're upset with someone. Now, oof is the lowest word to describe your, you're upset, you're being upset. Higher would be, oi, what are you doing? And some people say, khabir, gada, kutta, kudhata jata nahi hai. This is really bad, right? So the lowest word you can say to someone when you're upset is oof. Oh, when you're hurt, right? And you just control yourself. But Huzur never said oof to me as well, let alone any other bad words, swearing or abuse or insult or anything. And Anas is a young boy, and young boys sometimes do silly stuff. He also sometimes did something wrong, right? But he never said anything wrong. Right? If someone else tried to rebuke him, Huzur said, छोड़ो ना उसको, जो होना था हो गया. दऊहु फ़इन्नहु लौ क़ुज़िय शैउन लकाना. अल्लाह ने जो तक़दीर में लिखा था हो गया. मसलन कभी हज़रत अनस आ रहे हैं और इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं, तो प्याला गिर गया, टूट गया, तो घर में से कोई गुस्से, अरे प्याला तोड़ दिया तुमने. मगर हुजूर कुछ नहीं यार, तक़दीर में लिखा था, टूट गया, छोड़ो. तो ये हुजूर के अखलाक थे. आगे अच्छा, ये 10 साल खिदमत कैसे की? असल में हज़रत अनस वाज यतीम, because his father is Malik ibn Nadr. He died, so he was living with his mother Sulaim. And Sulaim brought him to Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. He was 10 years old, and she said, Ya Rasulullah, you've migrated to Medina from Makkah, you need someone to do your khidmat. Inna Anas ghulamun qayyisun falyakhdumka. Anas is an intelligent boy, let him do your khidmat. So Huzur said, okay. So Anas used to sleep at his mom's house, but during the day he would come and stay in the khidmat service of Nabi sallallahu alaihi wasallam. किसी को बुला कर ले आओ, फुना काम कर दो, सौदा ले आओ, कभी इस्तिंजा में जा रहे हैं तो साथ साथ हो लिए, लोटा साथ उठा लिया, नेज़ा साथ उठा लिया. तो खिदमत में हर वक्त रहा करते थे, दिन भर खिदमत में रहते थे. तो उसमें sometimes these things happen, ups and downs, but Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam never rebuked him. Also, wala qala li shay'in fa'altu lima fa'altu. If I did something, he would not say, why did you do this? No, or something I didn't do, why did you not do this? Now, Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayhi said, this is things which are related to khidmat, personal khidmat, right? So with personal khidmat, if he did something wrong, Huzur wouldn't say anything. With regards to deen, shariat, if someone did something wrong, Allah's हुक्म तोड़ा, उसमें हुजूर बहुत गुस्से हो जाते थे. जैसे हजरत उसामा पर बहुत गुस्से हो गए थे. उन्होंने सिफारिश की कि इस औरत के हाथ काटने का फैसला जो है उसको चेंज कर दो, जरा माफ कर दो इसको. गुस्से हो गए. या उसामा अतशफाउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, are you doing सिफारिश for had? This is Allah's हुक्म. How can you tell me to break Allah's हुक्म? It's not possible. बहुत गुस्से हो गए, बहुत गुस्से हो गए कि अल्लाह का हुक्म जहाँ टूटे वहाँ तो हज़रत आयशा ने हदीस में कहा है, फ़इज़न तुहिक मिन महारिमिल्लाहि तआला शैउन लम यकुम लिग़ज़बिही शैउन.
If Allah's hukum was broken, then nothing could withstand his anger. He would be really, really angry. So this Anas radiallahu anhu, because he was khadim, so his statement is with regards to matters of khidmat and service, right? Personal, मेरा काम काज में कुछ गड़बड़ कर दी, मुझे तो तकलीफ दे दी, Hazrat Sheikh Rahmatullah alayhi, right? With regards to personal, he was very gentle. Our Hazrat mentions that in Medina Munawwara once we seated Hazrat in the car, right? And Hazrat was still holding on to the door, and he was trying to sit himself properly, and someone banged the car door. And Hazrat screamed, "Arr!" And Hazrat's thumb was stuck in the door. And we quickly opened the door, and his whole thumb had turned, green, bruised, black. But Hazrat never said a word. He never even asked, कि ये कौन बेवकूफ था जिसने दरवाजा बंद किया? Because this was matter related to him, his own zat. So he was not angry on that. हाँ, if अगर इस्लाह की बात हो तो उसमें हजरत शेख बहुत गरम, और किसी ने कोई दीन का कोई काम खराब किया, कुछ रॉन्ग किया, तो उसमें हजरत बहुत गुस्से हो जाते हैं, अरे क्या करते हो, तुमको शर्म नहीं आती, और ये अल्लाह का हुक्म तोड़ते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो. तो ये जो अल्लाह का हुक्म है उसमें मशाइख बहुत गर्म हो जाते थे. चाहे इस्लाह नफ्स हो, मुरीद की इस्लाह करनी हो, तो मुरीद जो है गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है तो उसको डांटना पड़ता है, उसकी इस्लाह करनी पड़ती है. अरे क्या करते हो, रमज़ान का महीना है, लोग शोर मचाते हैं, बातें, अरे मस्जिद में शोर मचाते हो. बहुत गुस्से होते थे, गर्म हो जाते थे. हजरत पीर साहब बहुत गर्म होते थे. पीर साहब तो बाज़ मरतबा वो डंडा लेके निकलते थे, और एहतिकाफ में कोई बातें करा, धाड़ धाड़ डंडे से पिटाई शुरू कर देते. मस्जिद में बातें करते हो, शर्म नहीं आती, बातें करने हैं यहाँ पर. तो और नमाज के लिए सोए पड़े रहते हो, उठते ना हो तो जगाने के लिए बार बार आवाज़ दिया, नहीं उठे तो डंडे से पिटाई करके उठाते थे. तो वो अल्लाह के हुक्म के लिए अलग बात, लेकिन अपनी ज़ात के लिए वो बहुत जेंटल होते थे. हज़रत पीर साहब बेचारे यहाँ आए थे, तो हज़रत पीर साहब को हम वो शुगर टेस्ट करते थे, डायबिटीज़. तो अब वो रोज़ाना टेस्ट करना पड़ता था. अब बेचारे पीर साहब की उंगली में देयर वाज नो ब्लड इन हिम, सो आई हैड टू रब हिज हैंड अ लिटिल वे, एंड देन आई हैड टू टेक, ये बीच वाली उंगली ज़रा बड़ी है, तो उसमें से पीर साहब हाथ दिया, भाई तुम रोज़ एक उंगली को शहीद करते रहते हो, दूसरी उंगली से भी तो निकालो. बेचारे बोले वाले हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह. तो ये अल्लाह वाले तो ऐसे होते हैं. तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं कि ऐसे खिदमत के मामले में कभी हुजूर गुस्से नहीं हुए. साहब इब्न जस्सामा कहते हैं, उहदियत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहदैतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमारन वहशियन फरद्दु अलैहि फलम्मा रा मा फी वजही क़ाल इन्ना लम नरुद्दहु अलैका इल्ला लिअन्ना हुरुमुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि. Sa'b ibn Jassama says, I gifted to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahshi Gada, jungly donkey. So he returned it upon me. When he saw the feeling and expression in my face, due to the rejection and returning, he said, we did not give it back to you except because we are in ihram. أهديت إلى رسول الله حمارا وحشيا. Himar, donkey. Wahshi means wild donkey. Wild donkey, वो होता था wild donkey, domestic donkey की तरह. Zebra जो है वो भी wild donkey है, क्योंकि वो भी donkey जैसे ही है. तो उसको बाद मर्तबा शिकार करते हैं, पकड़ते हैं. तो इन्होंने वो शिकार पकड़ा था. He gave it to Huzur, but Huzur refused to take it. He said, sorry, we can't take it. Now, the wild donkey was still alive. It wasn't slaughtered. So he said, sorry, we can't take it. So, فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ, he saw that Sa'b ibn Jassama felt it bad, that Huzur rejected my hadiyah. He refused to accept it. So he said, oh bhai, we only give it back because we are in ihram. And in ihram, we can't hunt an animal, and we can't take a hunted animal from anyone. Right? If he was slaughtered and the meat was given, then he would have eaten it. Right? Like Abu Qatada, he had caught jungly animal, and jungly guy, Nil guy, and he had slaughtered it, and they ate some meat and gave some to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and he ate it. But live, जिंदा animal, उसको नहीं रख सकते हैं, इसलिए return कर दिया. So Huzur's good akhlaq, that he did his excuse, mention the reason why he can't take it. This is good manners, that if you can't accept something, you give a genuine reason for it.
right? If someone invites you for walima or dawat, you don't just refuse to go, I'm not coming. It's bad manners. You say, I'm sorry, I have an appointment, or I'm out of town, I'm going somewhere else, I'm busy, I'm sorry, I won't be able to make it. So you mention the excuse. This is good behavior, good akhlaq. चलिए وعن نواس بن سمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بدبره وقال بالحسن قل الله معك في صديق وغيره طلع على الناس. I explained this before. Do you remember this? I asked Nabi sallallahu alaihi wasallam about neki and guna, virtue and sin. He said neki is having good akhlaq, good manners, and sin is that thing which disturbs your inner feelings and you would dislike people becoming aware of it. In Babul Wara wa Tarki Shubuhat, we explained this. We said that bir and ism are clear, right? Good and bad, vice and virtue. Right? Everybody knows what is right, what is wrong, what is good, what is bad. But sometimes you get confused, is this good or is this bad? Right? So if you want to find out, then check. If it's connected to husnul khuluq and good behavior, good akhlaq, good manners, and you feel at ease in doing it, then that thing is good. But if it gives a niggling feeling in your heart, and you look over your shoulders, I hope nobody sees me, right? Then that means it's a sin. Don't do it, right? Like cigarette, तो चुपचाप से सिगरेट पीजिए, मोल सब आए तो फेंक देते हैं. मतलब ये है कि तुमको डर लगता है ना कोई देख न ले उसको. That's a sin. So ism is when you feel that you have that feeling in you and you don't want people to become aware of it, then that's ism and sin. चलिए आगे. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من خياركم احسنكم اخلاقا. Abdullah ibn Amr ibn al-As says Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was neither foul-mouthed nor did he attempt to speak any vulgar language. He would say, indeed the best among you are those who have the most beautiful akhlaq. Fahish is a person who is naturally vulgar and foul-mouthed, obscene. गालियां बकता है, शोर मचाता है, बक 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 बकवास and swearing and abuse and insult, right? So that is fuhsh. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was never fuhsh naturally. Okay, his nature was not like that. Wala mutafahishan. Tafahush means to pretend to be vulgar, right? बाज़ लोग को गाली बकना आता नहीं तो दूसरों की कॉपी करते हैं. फिल्म में गालियां सुनी हो तो वो बकते हैं, F और B वर्ड और उनके जैसे बोलते हैं. तो बोलना नहीं आता लेकिन गालियां बकते हैं. तो ये attempt and pretend. So he never attempted to be vulgar either. So both, he was not naturally obscene and foul-mouthed, nor would he attempt to speak in that manner. बाज़ों को मजा आता है ना, they feel they get a buzz out of it, of saying some bad words and gunah words and galim galuji. So Huzur would never feel like that. And he would say, Inna min khiyarikum. Indeed, among the best among you are the one who have the most beautiful akhlaq. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء نثقل في الميزان عبده والقيامة من حسن الخلق. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, on the day of Qiyamah, there will be nothing more weightier than good manners. وإن الله يبغض الفاحش البذية. And indeed, Allah hates the vulgar and foul-mouthed person. Athqal from thiql. Thiql means weight. Athqal is ism tafzeel, more weighty. في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة. The scale in which the a'mal will be weighed on the day of judgment. There will be nothing more weightier than husn khuluq. Right? Namaz, roza, zakat, everything when done with ikhlas will have a weight in itself. But the most weightiest amal and deed on that day will be husnul khuluq. Right? Husnul khuluq is ajib. It has amazing reward. Right? So khush khulqi, because when you have good akhlaq,
You will be very nice and kind and gentle with everyone. Everyone will love you. Everyone will pray for you. Even after you die, they will pray for you. They will send you sawab. They will do dua maghfirat for you. This is what will increase your a'mal and the weight of the a'mal on the day of Qiyamah. So have the best of manners and best of behaviors. And then in Allah yubghidu, abghada yubghidu, ibghazan means to have books and hatred and dislikeness. Al-fahish, al-bazi, fahish, who speaks fosh, gandi, dirty language, and al-bazi, who's foul-mouthed. Imam Nawawi said, الذي يتكلم بالفحش وردي الكلام. Bazi is the one who speaks vulgar language and raddi language, raddi speech, filthy speech. وعن ابي هريره قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was asked about what is the thing that mostly takes people in Jannah, and he said two things, taqwa and husn khuluq. He was asked about what is the most thing which takes people into Jahannam, and he said two things, the mouth and the sharamgah. Okay, aksari ma yudkhilun nas al jannah, the thing that most takes people in Jannah. And he said two things. Number one is taqwa. Of course, taqwa is taqwa, fear of Allah, being constantly aware of Allah subhanahu wa ta'ala. So this constant awareness of Allah subhanahu wa ta'ala is what takes a person to Jannah. And husnul khuluq, good manners, good behavior. Right? You have good behavior, then that will take you into, pull you into Jannah. And Jahannam, al-famu wal-farju, mouth, because galam galoji, obscene language, you speak dirty, filthy stuff. And ghibat, backbiting, namima, chugli, swearing, abusing, arguing, screaming your head off, fighting. These things push a person into Jahannam. And al-farju, sharamga. Sharamga meaning zina. Zina, people commit zina, and zina is something that leads people to Jahannam. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين ما أحسن خلقا وخياركم لنسائهم. The most perfect among the believer in his iman is the one with the most beautiful akhlaq, and the best among you is the one who are best towards their families and their wives. The best of you are those who are best to their women. Like Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu treated his wife nicely, right? Hazrat Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam himself, he said, "Wa ana khayrukum li ahli." Right? He never lifted his hand on any of his wives to hit them or slap them or punch them. Never, ever. Oh, 9 wives, they did annoy him sometimes, but he was very gentle person. कभी मारा नहीं. तो और बीवियों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते थे, बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर. वाइफ है, बेगम को क्या गुस्सा करना, कोई नहीं है, बेगम होता है इस चीज़ से. तो he was the best towards his family. So he said the best among you are those who are best towards their family members. चलिए आगे. وعن عائشة رضي الله عنها indeed a mu'min with his khushkhulqi and good akhlaq reaches the rank of a sa'im al-qa'im, a constant fasting person and constant tahajjud praying person. Sa'im, rozedar, qa'im, tahajjud guzar. So he cannot do so much sawm and tahajjud, but because of his good akhlaq, he reaches their rankings. وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه داود باسناد صحيح. الزعيم الضامن. I am a guarantor of a house in the courtyard of Jannat for a person who leaves argument even if he is on haqq and speaking the truth. And I am guaranteeing a house in the middle of Jannat for one who leaves lie even in joke. And I am guaranteeing a house in the highest part of Jannat for a person who beautifies his characters. Za'imun yani kafilun, zimmedar, responsible, guarantee देता हूँ.
मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कफील हूँ, बेबैतिन फी रबदिल जन्ना। रबद मीन्स कोर्टयार्ड, जन्नत का कोर्टयार्ड। अब जन्नत के वरंडे में कोई मकान मिल जाए तो भी बहुत है। हमारे घरों में, हमारे इहाते के अंदर वो छोटा सा झुपड़ा बनाते हैं, हट बनाते हैं। लंदन में बाज़ लोग जो है घर के बाहर जो है गार्डन है तो उसमें एक छोटा सा घर जैसा बना देते हैं, उसमें एक बेडरूम, किचन, बाथरूम। तो बच्चे की शादी कराई तो कि तू रहे इसमें जा, तो खाना पीना हमारे साथ और वो घर तेरे लिए। तो अपने घर के कोर्टयार्ड में इस तरह का छोटा सा घर बना देते हैं। तो जन्नत के कोर्टयार्ड में घर मिलेगा। लिमन तरकल मीरा, मीरा इज मारा युमारी मुमारातन व मीरान, झगड़ा करना। जादल युजादिलु मुजादलतन व जिदालन। So who leaves jhagda, an argument, even if he's on the truth? Yeah, you know, you're speaking the truth, but the other person doesn't want to say, okay, bhai, all right, okay, you are right, I'm going, Qudafis. So though you are right, but you give up, I don't want to argue with you. So sometimes you have to do that, because some people are so unreasonable, they just don't want to accept. So you just leave it. Even on WhatsApp sometimes, discussion chalta hai. So you speaking the truth, but the other person doesn't want to accept it. He says, no, I don't accept it. No. And he keeps arguing. He says, okay, bhai, Khudafiz, thank you very much. This is my last comment. I'm not going to make any more comments now. So you leave argument even though you're speaking the truth. Muhiqqan haqqa yuhiqqu ihqaqan means haq baat karna. And I am guaranteeing a house in the middle of Jannat. Okay, wasat means middle. Jannat के बीच, वो बीचों बीच, उसके लिए जो झूठ छोड़ दे अगरचे जोक में हो. Meaning he tries his best never to tell a lie, even in jest and joke. बात मतलब हंसी मजाक के तौर पर भी झूठ बोल देते हैं ना, कोई झूठा किस्सा सुना दिया, कोई झूठी बात कह दी, ऐसे ही जोक में फिर कह दिया कि वाह वाज ओनली जोकिंग, राइट? तो फरमाया नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए. तो जन्नत के बीच में घर मिलेगा उसको जो बिल्कुल झूठ ना बोले, इवन इन जोक एज वेल, राइट? और वो भी वही फी आल जन्नत, सब टॉप जन्नत में उसके लिए मकान का जिम्मेदार हूँ जो अपने अखलाक अच्छे कर दे. हसन खुलुकहू, दिस मीन्स यू हैव टू ब्यूटिफाई योर अखलाक, राइट? You have to work on your akhlaq. So the third call, you remember I said that part of it is natural and part of it is earned and iktisabi. So hassana khuluqahu says you have to try and make your characters beautiful, work on your characters. ओके जी, सूफिया किराम के यहाँ बैयत हो जाते हैं, फिर उनकी सोहबत में रहते हैं तो सूफिया किराम डांटते भी हैं, बे सीधा रहे. सूफी को नजर आ जाता है कि ये हसद कर रहा है दूसरे से, इसमें तकब्बुर है, इसमें रिया है, तो उसकी इस्लाह कर देते हैं, भाई ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर अपने नफ्स की इस्लाह करा देते हैं, तो जो अपने अखलाक दुरुस्त कर ले. आगे चलो. वान जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हब्बकुम इलैहि व क़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति व अहसनुकुम अख़लाक़न व इन्ना अबग़ज़कुम मिन्नी व बअदकुम मिन्नी यौमल क़ियामति अस-सरसारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़य्हिक़ून. क़ालू या रसूलल्लाह क़द अलिमना अस-सरसारून वल मुतशद्दिक़ून. क़ाल फमल मुतफ़य्हिक़ून. क़ाल अल मुतकब्बिरून. Indeed, the most beloved among you to me and the closest to me in sitting on the day of Qiyamah will be those who have the most beautiful akhlaq and manners. And the most hated among you to me and the most distanced from me on the day of Qiyamah are the ones who talk too much and pretend to be good, and wal mutashaddiqun, who scream a lot, and mutafayhiqun, and who fill their mouths with vulgar speech, with takabbur and badai. They said, Ya Rasulullah, we understand sarsarun, mutashaddiqun. What is mutafayhiqun? He replied, the mutakabbirun. Again, the first sentence is clear. Min ahabbikum ilayya, among the most beloved of you to me, I love them most. And aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah, the closest in sitting to me on the day of Qiyamah, who will be very close to me, are the ones ahasinukum, ahasin plural of ahsan, ahasinukum akhlaqan, with the most beautiful akhlaq among you. And abghazakum is opposite of ahabbakum. Ahab means sabse mahbub, abghaz means sabse mabghuz, disliked. The most disliked among you to me and the most distant in sitting are as-sarsarun.
Sarsar, Imam Nawawi said, Kathirul Kalami Takallufan. Those who talk a lot by way of takalluf and pretension, who pretend to be very good speakers, और बोल 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 बहुत करते हैं. So those who speak a lot by pretending to be big speaker. Al-mutashaddiqun is from shidqun. Shidqun means jabra. Jabra, ये जबड़ा. तो मुतशद्दिक मीन जबड़ा फाड़ फाड़ के बोलने वाला, राइट, और बहुत जोर जोर से स्क्रीम करता है और बहुत फसीह, बलीग, एलोक्वेंट स्पीच का दावा करता है. So those who talk a lot and who scream a lot, and mutafayyiqun, तफय्यक़ की तफसीर यहाँ कर दी, तकब्बरा मल मुतफय्यिक़ून, फरमाया मुतकब्बिरून. इसकी इमाम नववी की शरह देख लो. अस्सरसार हुआ कसीरुल कलामी तकल्लुफन. Sarsar is a person who speaks a lot by way of takalluf and pretension. He pretends to know everything. He has to have answer for everything, and he just speaks, बहुत बातें बक 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 करता रहता है वक्त. और al-mutashaddiq al-mutatawilu ala an-nasi bi kalamihi wa yatakallamu bi mil'i famihi tafasuhan wa ta'ziman li kalamihi. Mutashaddiq is the one who boasts over people with his speech, and he talks with full mouth by way of eloquence and by way of thinking big of his kalam and speech, and doing azamat and greatness to his speech, that my speech is the best and I am the most fasih and eloquent person, और जबान फाड़ फाड़ के जबड़े फाड़ फाड़ के बोलता है. वल मुतफय्यिक़ अस्लुहु मिन अल फ़हक़ी व हुवा अल इम्तिलाउ. It is the root word of mutafayyiq is fahq, which means to fill. Imtala yamtali imtilan means bharna, full. وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. That is a person who fills his mouth with speech and who expands in it, and who brings amazing words by way of takabbur and making himself high above others, and making and elaborating on his virtue over others. يملأ فمه بالكلام, fills his mouth with speech, and يتوسع فيه, توسع उसमें वुसअत पैदा करना. ويغرب به, अगरब युगरिब, इगराबन means दूसरों को amaze और surprise करना. गरीब, amazing, wow, he brings amazing words, ऐसे अल्फाज जो किसी को समझ ही ना पड़े, हवा में उड़ जाए. कहेगा वाह यार, ये तो बहुत बड़ा स्पीकर है, ये तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, इसकी बात तो समझ ही नहीं पड़ती क्या कहता है. लोग तारीफ करते हैं, समझ नहीं पड़ती उसमें क्या तारीफ करना, समझ नहीं पड़ती तो क्रिटिसाइज करना चाहिए. लेकिन he brings amazing words and takabburan wartifa'an wa izharan lil fazilati ala ghayrihi, in order to show his haughtiness and pride, and to make himself big and to elaborate his fazilat and virtue over others, is called al-mutafayyiq. मुंह भर भर के बोलने वाला, फीलिंग विद मुंह भर के. तो असल में सरसारुल मुतशद्दिकुल मुफय्यिक़, तीनों का ताल्लुक किससे? स्पीच से है, कि बोलने का अंदाज उसका बोल में अजीब सबको सरप्राइज करता है अपनी स्पीच से, और मकसद उसमें तकब्बुर और बड़ाई है. जैसे अक्सर जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग जो बक 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 करते हैं, स्पेशली अभी ये टीवी पे जो लोग आते हैं, ये खबीर ज़ायनिस्ट, वो लोगों को धोखा देने के लिए और इतनी लंबी लंबी बातें करेंगे कि जिसका कोई ये नहीं. और बेचारे ये जो एनकैम्पमेंट में जो लोग मार्च करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उनके सामने खड़े होकर कितना अब्यूज़ करते हैं, उनको कैसा बोलते हैं. अल्लाह तो हमको डर लगता है. बेचारी हिजाब वाली बच्चियाँ कितना सब्र करती हैं बेचारी. तो ये ऐसे खबीस लोग जो होते हैं, जबड़े फाड़ फाड़ के स्क्रीम करने वाले, ये अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है. ये सब खबीस हैं, जहन्नमी हैं, और अल्लाह पाक इनकी पकड़ करेंगे. आगे रवत तिरमिज़ी अन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फी तफसीर हुस्नुल खुलुक़. Abdullah ibn Mubarak said regarding tafsir of husn khuluq, huwa talaqatul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Cheerfulness on the face and spending
what is commonly known and withholding the abuse from others. Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayhi was an amazing personality. You know, he is such a person that nobody criticized him. You know, he had all the good qualities in him. Faqih, alim, zahid, abid, sakhi, shuja and brave and sha'ir. And, you know, he used to go out in jihad fi sabilillah. He used to pray tahajjud at night. He used to go in hajj a lot. He used to take ulama with him for hajj. And he would say to them, you can come with me for hajj, but one sharat. You have to give me all your money. And I will be the Amir and I will do everything. Hundreds of ulama would go with him. And then he would spend on them, look after them, fulfill all their needs, keep them at ease. And when Hajj would finish, he would give them their money back. And everything he had spent was from his own pocket. So that's how he was. So Abdullah ibn Mubarak rahmatullah said that huwa talaqatul wajh. Talaqatul wajh, taliq means a smiling face, cheerful person. So husni khuluq, good manners is that you are always happy and cheerful and approachable and easygoing with people, smiling, right? One Sahabi said, "Ma ra'aytu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." I have never seen anyone more smiling than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So khushkhulqi is to have a cheerful, smiling, good sense of humor. And then he said, talaqatul wajh and badlul ma'roof, and spending that which is commonly known. Now this means spending money on others. At the same time, if you don't have money, then spending your time, wajahat, your honor, right? You help others and you are always there for the people. कोई मशवरा है, कोई बात है, कोई चीज है, right? So you're there and people know that you are approachable, they can come to you, you will spend your time on them, you will give them your time, you will fulfill their need, right? Even to the extent of replying to text or WhatsApp or email or replying to phone call, right? Calling back if need be, right? You spend your time and your effort on others. This is all included in Bazlul Ma'ruf. That spending and that which is commonly known and commonly needed among people, whether it's wealth or time or other, help, whether you can intercede for someone, speak up for someone, भाई जरा इनका ये काम कर देना भाई, तो आपकी बात मानेंगे वो, तो आपने कह दिया कि जरा फुना को इतना हेल्प कर देना, तो ये चीज है. आगे कफ्फुल अज़ा, कफ्फ यकुफु कफ्फन means to withhold, stop. So withholding your abuse and insult from people. Some ulama said that husnul khuluq is gathered in the ayat of Surah Araf, wherein Allah said, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hold on, pardon, and command others to do ma'roof and good thing. Like Kashif by Tabligh, Amr bil Ma'roof, helping others and inviting them towards good. So wa'mur bil Ma'roof, Amr bil Ma'roof karo. और वो आरिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिल लोगों से अपना मुंह मोड़ लो, जाहिलों के साथ इंडल्ज मत हो जाओ. जाहिल है, वो खुद भी परेशान होगा, तुमको भी परेशान करेगा, तो जाहिलों के साथ झगड़ा मत करो. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा कुछ हुआ, एक शख्स जो है आया हुआ था, वो इतना सही अखलाक वाला नहीं था, तो हज़रत उमर की मजलिस में उसके कज़िन या नेफ्यू बैठा करते थे. उसको कहा कि यार हज़रत उमर की यहाँ तेरी मजलिस है, मुझे थोड़ा टाइम ले देनी, मुझे उनसे कुछ बात करनी है. उसने हज़रत उमर से कहा, मेरे चचा आए हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं. ठीक है, तो अब वो टाइम दिया हज़रत उमर ने, वो आए बैठने मिलने के लिए. तो अब जो है उसने बैठ के कुछ हज़रत उमर की बेइज्जती बदतमीज़ी कर दी. हज़रत उमर, आप बराबर इंसाफ से फैसले नहीं करते हैं और आप माल बराबर तकसीम नहीं करते हैं, बराबर क्या करो. हज़रत उमर लाल पे, तेरी माँ की ऐसी तैसी, तो मुझे कहता है कि मैं बेइंसाफ हूँ. अब वो जो नेफ्यू लाया था वो डर गया. उसने कहा, यार अमीरुल मोमिनीन इन्नल्लाह तआला खुदिल अफ़्व वअम्र बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन वहज़ा मिनल जाहिलीन. ये जाहिल है, आप क्यों इसके साथ, ये छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, हम हज़रत उमर को परेशान कर दिया. हज़रत उमर फौरन रुक गए. जब आयत पढ़ी तो चलो, अल्लाह ने कहा खुदिल अफ़्व, माफ़ करो, वअम्र बिल उर्फ़ि, भलाई का हुक्म दो, और जाहिलों से मुंह फेर दो. ये जाहिल है, छोड़ो इसको. तो इसमें अच्छे अखलाक अल्लाह ने जमा कर दिए इस आयत के अंदर.
अल्लाह हमें उसने खुलुक नसीब करे। जाओ, खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह।